Okay, right. So let's start. Sorry, Ashish sir का थोड़ा सा तबीयत खराब है. That's why I'm taking his classes. Okay. Samartha, I'll let you know. No issues. I'll let you know. ठीक है. मैं सेट करके बताता हूँ ग्रुप में. ठीक है. Okay. Okay. Now, when we talk about the syllabus, we are done with this, right? है ना? We are done with this. Agree? Right? What about this? 9P2? No, right? है ना? But हम लोगों ने ये as a test के लिए practice कर लिया है. ठीक है. Now, how many of you want to read this chapter? Like थोड़ा सा extra? किसी को interest है थोड़ा सा extra पढ़ने में? नहीं, बचा syllabus ना वे. This Sunday's portion, right? Will be बचा syllabus. I'll just inform. ठीक है? Right? ना हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो बचा ना, ग्रेविटेशन, वर्क और एनर्जी. साउंड तो है नहीं. ठीक है, साउंड नहीं है ना? यस. ओके. नाउ एक चीज बताओ, वर्क एंड एनर्जी आई गेस सबको आना चाहिए. वर्क एंड एनर्जी हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस किया है. सबको वर्क एनर्जी अच्छे समझ में आ गया है बिकॉज वी हैव स्पेंड अराउंड मोर देन 1.5 month वी हैव स्पेंड ऑन वर्क एंड एनर्जी, राइट? है ना? ओके. ओके. So do you want me to revise gravitation or force and law of motion? Okay, Prahlad, percentage problem, then that's a problem. Gravitation, right? Okay, ठीक है. चल लोग gravitation करते हैं. Okay, very good. ठीक है. Gravitation. Let's start with gravitation. Okay, we will revise gravitation. Now, थोड़ा सा extra पढ़ना है तुम लोगों को. Tell me, how many of you want to read something extra? Yes? No? वास्तव? अब इस पे ध्यान दो, सब इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी, राइट? ठीक है. नितिन, वेरी गुड, राइट? ठीक है, चलो. See, that's the spirit, right? You should learn something extra. हमेशा थोड़ा सा extra सीखना चाहिए, है ना? Okay. Now, Navya, wait, I'll inform all these things. अभी यहाँ पे focus करो, ठीक है? अभी हम topic पे focus करते हैं, ठीक है? Right? ठीक है, चलो. So when you talk about this topic, gravitation, हम लोगों को क्या सबसे पहले क्या strike करता है? Tell me, what is the first thing that pops up in your head when we talk about this topic, gravitation? Tell me. Everyone, right? Be responsive, right? Be responsive. What do you think? Sir, Earth gravitational force, right? Force on Earth. Apple from tree. Yes, sir. Newton के सर पे जो गिरा था, right? Attraction. Very good, वास्तव, है ना? Object drops from down. Okay. The force that pulls us toward the Earth. Okay, right? So I guess मुझे बहुत basic चीजें बताने की जरूरत नहीं है. Newton's apple, right? है ना? अगर मान लो नव्या तुम पार्क में बैठी हुई हो और एप्पल अगर तुम्हारे सर पे गिरता है, व्हाट यू विल डू? राइट? यू विल बी हैप्पी, अरे एप्पल मिला, एंड यू विल ईट इट, राइट नाव्या? यस, एग्जैक्टली. नॉर्मल पीपल would eat it, but think about this Newton guy, right? Instead of eating it, he's like, why this apple fell from the tree and all those things. Okay, and then he gave this big topic called gravitation. Now, surprising thing is, you know that the Newton is the guy who discovered, right, or who basically formed differentiation. Do you know this? And because of the calculation, okay, the calculation which was required for this gravitation only. Yeah, because of this, that yeah, not eating the apple and thinking about that, we have to study these things. But again, it's interesting thing. Okay, so let's talk about some theory that we know. We know that, right? We know that when you talk about gravitation, so it is a kind of force. Yes or no? It's a kind of force, right? Which is acted between two objects. Yes or no? है ना? Suppose I'm having this object one, and this is your object two, right? So the object one is having mass m1 and the object two is having mass m2. So I can say, okay, if I'm having two objects, first of all, there should be two objects, है ना? Obviously, एक object पे force तो नहीं लगेगा. There should be two object, right?
one which is applying the force and second on which the force is applied. है ना? Clear? Right? Okay. Yes. Now, according to Newton, I said this is one thing which I want to let you understand, right? So think about it. According to this guy, according to this Newton, I can say, okay, sir, these two forces, M1 and M2, will apply a force between each other, right? Or we will have the force that would be attractive in nature. But what is the magnitude? Janvi, message to host only, right? Message to host. Okay. 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 So he said this. Okay. Let's see. So I'm having this mass M1 and M2. Okay. So what would be the value of force? The force का value होगा कितना, है ना? So what do you think? Don't you think that this force will depend on mass M1 and M2? Hi Anna, tell me, everyone. Don't you think that this force is depending on this mass M1 and M2? Right? Okay. And surprising thing is, right, it is dependent on the product of M1 and M2, right? Product of M1 and M2. Okay, so this is the experimental observation that Newton's did. Okay, key force between these two objects having mass M1 and M2 is depending on the product of their masses. है ना? जरूरी नहीं है कि दोनों mass बड़ा होना चाहिए. Suppose one is your 1000 kg, right, and one is your 2 kg, right? है ना? And in second case, it is suppose 200 kg, and this is your 10 kg, right? Okay, and third case, it is 100 kg, and it is 15 kg, right? In which case the force should be maximum? Tell me, in which case the force should be maximum? Case A, case B, case C. Think about it. Case A, case B, case C. Tell me. Sir, case A, case B तो same हो जाएगा ना sir. 1000 into 2 is 2000, right? And 200 into 10 is also 2000, right sir? So case A, case B should be same, right? Anna, what about third case? 100 into 15 is 1500, right? So sir, case A, case B में force ज़्यादा होना चाहिए as compared to case C. ठीक है? Clear? Right? So this is the first thing, which is intuitive. समझ में सबको आ रहा होगा, intuitive है ना? This is intuitive, right? Okay? Yes, it would be less in C. Correct. 1500. ठीक है? Now, second thing, suppose I'm having again two objects, right? ठीक है? This is again M1, this is M2, and it is kept at a distance of suppose R1. Now in second case, ठीक है, same mass M1 and same mass M2 is there, but now it is kept at a distance of R2. ठीक है? R2, right? हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, थ्योरी हम लोग नहीं करें, because theory I guess सबको पता होगा ना, definition लिखना and all those things. Yes or no? And you can or you should read books, right? You should read books and try to write the theory in your own words. ठीक है? So we will be talking about concepts. हम लोग आज concepts पे ध्यान देंगे. Now what do you think? किस केस में force ज्यादा है? First case की second case? Tell me. किस केस में force ज्यादा होगा? First की second? सबको ये intuitive समझना चाहिए. समर्था सेकंड केस में तो दूर जा रहा है ना, सेकंड केस में दूर जा रहा है, राइट? जो जितना दूर जाएगा उतना फोर्स कम होगा, ज्यादा होगा? कम होना चाहिए ना, राइट? दूर जा रहा है. यस, फर्स्ट केस, राइट? सेकंड से ओके, जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इनवर्सली, शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. जितना दूर जाएगा उतना फोर्स कम होगा. मैग्नेट का एग्जांपल ले लो ना, जो हमको दिखता है, मैग्नेट दिखता है, मैग्नेट का एग्जांपल ले लेंगे. कृष्णा, मैसेज टू होस्ट. Okay, message to host. So I can say, okay, sir, right? Now, but there's one peculiar thing, right? It does not just depend on, it is not just inversely proportional to distance. It is inversely proportional to distance squared. ये भी हम लोगों ने observe किया, ठीक है? Clear है? It is inversely proportional to distance squared, right? Means जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना ज़्यादा speed से force कम होगा, या उतना जल्दी, right? उतना ज़्यादा force कम होगा. Now, this is A, this is B. Right? This is A, this is B. Can I combine A and B? Tell me, can I combine A and B? Hi, Anna.
प्रहलाद इट इज एक्सपेरिमेंटल ना, प्रहलाद एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तुम जो ऑब्जर्व करते हो राइट, उसको तुम मैथमेटिकली लिखते हो राइट, पॉइंट पुट पुट करके। जैसे अब एक सिंपल सा सवाल है ना, अगर तुम हॉट कॉफी को टच करोगे तो क्या तुमको गर्मी लगेगी, हॉट लगेगा, यस और नो, राइट? So that is the observation ना, then you'll say नहीं सर ये कॉफी गर्म है, हॉट है, राइट? So that is the observation, yes or no, है ना, right? Then you will do some experiment to measure the temperature, so that is your experimental value. So when you talk about physics, most of the physics, right, is your either it is theoretical physics or it is experimental physics, ठीक है? So these are all are experimental physics, ठीक है, right? So Newton's के most of the theories will be experimental. So if you combine these two, let's combine these two. So you can say, okay sir, अगर हम combine करते हैं तो F is directly proportional to m1 m2 by r square. Clear है? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? सबको समझ में आ रहा है? जानवी जानवी is like काश वाटरमेलन गिर जाता है। वाटरमेलन पेड़ पे नहीं उगता जानवी, राइट? तुमको जैकफ्रूट बोलना चाहिए, है ना? जैकफ्रूट गिर जाता है, ठीक है, right? Now we know that this is a proportionality constant. Samarth is like, my video is lagging, guys, my video is lagging, tell me. Yes, just wait a minute, it might be because of internet issues. It's clear, okay, so it might be your internet issue, मेरा internet ठीक है, ठीक है. Now this is proportionality. So in order to remove proportionality, we know that we have to use a constant, right? Krishna, you like poor Newton, you guys are trying to or planning to murder him, ठीक है? विकास वेट, हम समझा रहे, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ग्रेविटी ग्रेविटेशन को सब क्लियर होगा, ठीक है, समझो. सो F इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हम इक्वालिटी साइन दे रहे हैं, है ना, राइट? सो इट विल बी k sorry not k is electrostatic, it would be g, capital G. This is a proportionality constant which is called as universal gravitational constant, right? Or just gravitational constant, m1 m2 by r square. सबको समझ में आया ये? सबको समझ में आया? Where g is a constant, g एक constant है, ठीक है, g is a constant. My voice is cracking, just give me a minute. Is it cracking, guys? See, if it is audible, if it is clear for any one of the student, means it is not my net issue, right? Okay, ठीक है, it is clear, Navya? Okay, it is clear, guys. So say g is a constant, right? So the value of g is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11, ठीक है, 6.67 into minus 11, right? Now unit, you have to talk about unit, so it is meter cube, right? kg. See, if you talk about the unit, right? Okay, forget about our units for now, ठीक है, अभी तुम लोग यूनिट अभी भूल जाओ, जी याद रखो सिर्फ, ठीक है. तो किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए, किसी को दिक्कत है इसमें? यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इजी है, बिकॉज इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट? वेरी गुड, बिकॉज फोर्स का यूनिट इज न्यूटन. ना आर स्क्वायर में जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये m1 m2 दोनों मास का नीचे जाएगा तो पर केजी स्क्वायर, ठीक है, राइट? अगर समझ में आता तो वेरी गुड. मानसा कैलकुलेट किया गया है, मानसा कैलकुलेट किया गया, एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया है, कांस्टेंट है ना, तो कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, ओके. Because when you define g, what is g? G is the force, think about it, g is the force between two masses having mass m1 m2. See, you can define it like this: g is force equal to force if m1 is equal to m2 is equal to 1 kg kept at a distance of 1 meter, है ना? So 1 into 1 by 1, F will be equal to G. So that force is this, ठीक है, right? So ऐसे कैलकुलेट किया गया होगा. सबको समझ में आ रहा है?
सबको समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ है ना? ठीक है। Anyone have any issue? Anyone have any issue in this? कि सर फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबको समझ में आ गया? हाथ डालो। राइट? अक्षता, माही, मनसा, मेलिसा, सृष्टि, यशीला, यशीला, विकास, एवरीवन इज गेटिंग दिस? ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, राइट नाव्या, वेरी गुड। ठीक है, सो अब देखो, अगर इस पे तुमसे सवाल पूछा जाए, राइट, इस पे तुमसे सवाल पूछा जाए, सो कैसे सवाल बनेंगे? इजी फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग बन जाएंगे ना, राइट? पूछा जाएगा सर व्हाट इज अ फोर्स, क्वेश्चन 1 टाइप 1, राइट, लेवल 1 क्वेश्चन, राइट? फाइंड f if m1 is equal to 2 kg, m2 is equal to 3 kg and distance is given, suppose distance is 5 meter. Formula putting getting, yes or no? बन जाएगा formula putting getting? Yes, F is force of gravitation. ठीक है मनसा, F is force due to gravitation, right? So level 1 problems is easy. Okay, now हम लोगों ने chapter 2 में पढ़ा है, sir we know that net sum of all the forces should be equal to mass into acceleration, yes or no? हाँ या ना, right? So I have studied, okay sir, according to Newton's second law, right, or second law of motion, I can say if I'm having any force, this force should be equal to mass into acceleration. हाँ या ना? हाँ या ना? Step by step. Yes, okay. मीटर is the unit. ठीक है नाव्या, मीटर is the unit, right? SI unit मीटर होता है, ठीक है? Now just imagine, think about it, just imagine. सब कुछ सोचो, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज बताओ, सपोज आई एम हैविंग दिस मास m1, राइट? ये मास मेरा हो गया m1, ठीक है, और ये हो गया मेरा m2, सपोज ये हो गया मेरा m2, ठीक है, m2, ओके, राइट? ओके, now first of all, जो gravitational force है, it is attractive or repulsive? Tell me, FG, gravitational force is always attractive, yes or no? हाँ या ना? हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, राइट? है ना? अच्छे लोग हैं सब, साथ मिलके रहते हैं, राइट? पुलिंग ऑलवेज. So if we talk about mass m1, the force on mass m1 is in this direction, yes or no, right? And the force on mass m2 is in this direction, agree? Yes or no? Yes or no? Tell me. Yes, so I can say, okay sir, right, this is what, this is force on, suppose, object 1 due to object 2. This is force on object 1 due to object 2. Yes or no? हाँ या ना? सब कुछ समझो, राइट? है ना? तुम अगर अपने दोस्त को खींच रहे हो तो तुम्हारा दोस्त भी तुमको खींचेगा, राइट? है ना? So this is force on 1 due to second and this is force on second due to 1. Clear है? हाँ या ना? Tell me. हाँ या ना? Right? Right? So can I say, okay sir, force on 1 due to 2 is equal to negative of force on 2 due to 1? Yes or no? क्योंकि सर डायरेक्शन अपोजिट हो गया ना सर, डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया है, राइट? बट वैल्यू तो सेम है, बिकॉज सर फोर्स का फॉर्मूला तो वही है ना, दो मास है तो g m1 m2 by r square ही होगा, राइट? where r is the distance between their centers, ठीक है? so I can say magnitude or value of force, right? Value of force is equal, which is equal to g m1 m2 by r square. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सब वैल्यू सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, ठीक है? यस, एग्री? टेल मी, एग्री एवरीवन? Anyone have any doubt in this? Anyone have any doubt in this? Okay, okay, very good. So now I want to find what is the acceleration of this mass m1. Acceleration of mass m1, right?
A of m1, so a1 which is of m1. So भाई अब हमको acceleration चाहिए, we want to know what is the acceleration of this mass m1. So can I say, okay sir, according to my Newton's law of motion, I can say force 1 2 should be equal to m1 into a1. Yes or no? Tell me, yes or no? This force is responsible for the motion of this object. Yes or no? Step by step. Tell me. Yashish is not here, I guess. फोर्स तुम पे लग रहा है और किसके कारण लग रहा है? यशस के कारण लग रहा है. Yes or no? So can I say force is on you due to Yashash, right? है ना? So that's the notation. F12 means force on one due to two. As simple as that notation है ना? Force on mass m1 due to m2. लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है? And this is force on 2 due to 1. Okay? Now, okay. Now अब देखो सब कोई सोचो यहाँ पे, what is this? सर ये तो फॉर्मूला पता है, gm1 m2 by r square is equal to m1 into a1. हाँ या ना? Tell me yes or no? Yes or no? Think about it. Yes. So m1 cancel. So what is a1? What is a1? A1 is equal to gm2 by r square. Yes or no? Yes or no? Step by step. In the same way, a2 on m2 acceleration, sorry, of m2, इसका acceleration क्या होगा? F21 is equal to m2 a2, which is g m1 m2 by r square is equal to m2 a2, right? So a2 is given by, in this case m2 m2 will get cancelled, g m1 by r square. हाँ या ना? Tell me हाँ या ना? सबको दो मिनट सोचो यहाँ पे, सबको 2 मिनट सोचो, right? Try to understand this concept, right? We will use this with gravity, right? फिर तुमको समझ आएगी gravity क्या होता है. Navya, F is equal to ma. Okay, हमारा Newton's second law आया that doesn't matter what kind of force is acting on an object, the net sum of force is equal to mass into acceleration, right? Clear है ना? Yes or no? Right? But वो force कौन सा है? Force किस कारण है? The force may be varied. It may be because of friction. It may be because of your mechanical forces. May be because of gravitational force. It may be electrical force, right? So that F is your variable gravitational force, and because of those force, body will move, right? है ना? And that motion is represented by this. ठीक है? समझ में आया ना भैया? है ना? सबको समझ में आ रहा है? Tell me. ठीक है? Okay. Or no? Tell me yes or no? Right? And A2 is due to mass on first object. Hi Anna. I am not audible. Guys, am I audible? Hello, check. Hello. Am I audible? Tell me. Audible, Puneet? Am I audible now? ठीक है. Very good, Mahi. Okay. So अब यहाँ पे बहुत important concept है. यहाँ बहुत important concept है. So I can say कि भाई m1 का acceleration कितना ज्यादा होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? m2 पे, मास
2 पे। दिस इज आवर अर्थ, राइट ना, दिस इज आवर अर्थ, राइट। और ये हो गया हमारा टीनी टाइनी, सपोज दिस इज टीनी टाइनी आदित्य। आदित्य है, आदित्य you're here, voice is lagging. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, right. So he is Aditya, he is my earth. Now earth ka mass is like, suppose the mass of earth is, I'm not writing the exact value, I'm just writing some random value, right? Kg, suppose, right? And our Aditya is like 45 kg, suppose, ठीक है ना, ठीक है, right? नाव्या, वो बहुत बड़ा वैल्यू होता है ना, इसलिए हम लोगों ने एक बहुत छोटा वैल्यू लेके रखा है, ठीक है। और बेटर इसको 50 ले लो, 50 kg, है ना, ठीक है। नाउ अब एक चीज बताओ, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू, टेल मी। और व्हाट इज a1, स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज a1, व्हाट इज a1, a1 is equal to what, tell me। It is g into m2 which is 50 by r square, r कुछ है, r को नहीं पुट कर, r का वैल्यू जो है वो है, राइट, देयर इज सम वैल्यू, सम डिस्टेंस, दिस इज r, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स, राइट, दिस इज r, ये कुछ है, so this is a1, and a2 is equal to what, g into 1 2 3 4 5 8 zeros 10 to power 8 by r square। अब बताओ, don't you think that a1 is very less as compared to a2, हाँ या ना, tell me। a2 is very higher, have more value as compared to a1, सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? Everyone is getting this, everyone is getting this, ओके। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, अब इसका बहुत सारा नाम है, ओके। दिस इज बेसिकली व्हाट, a is equal to force per unit mass, yes or no, right? Agree, this is also called as gravitational field or gravity if you take earth or any planet, अब समझ में आया सबको कि what is gravity, what is gravitational force? Sir, gravity is nothing but acceleration due to earth, clear है, right? Gravity is nothing but acceleration due to earth, so g is nothing but acceleration due to earth, which is f by mass of the object, हाँ या ना, सबको समझ में आ गया? Tell me yes or no, everyone, yes or no, right? So it is called as gravitational field or gravity. Okay, Vaishnavi, I'm explaining. So I can say, okay, sir, force, gravitational force is given by G, capital M, or M1, M2 by R square, where suppose capital M is mass of Earth, right? And M2 is mass of object, any object on Earth. ठीक है, clear है ये चीज, step by step, right? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है ना पहला, right? This is F that I'm writing, so I can say okay, G, acceleration due to gravity, G is acceleration due to gravity, right? That's why G is called as acceleration due to gravity, because it is acceleration. It is Fg by, now acceleration किसका, mass m1 का, so it should be Fg by, sorry, mass m2, ठीक है, so it will be what, G capital M1 by R square, हाँ या ना, स्टेप बाय स्टेप, हाँ या ना, यहाँ तक सबको समझ में आया?
ठीक है, ओके, एवरीवन इज गेटिंग दिस। मानसा देखो, एफ का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, एफ इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, पुट कर दो यहाँ पे, तो m1 m1 m2 m2 कट जाएगा, राइट, सो वी विल बी लेफ्ट विथ जी m1 बाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, टेल मी, m2 m2 कट गया ना, तो ये आ गया, एग्री, टेल मी स्टेप बाय स्टेप, सबको समझ में आ रहा है मानसा, राइट, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि भाई होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। अब तुम बताओ व्हाट इज मास ऑफ द अर्थ। सो अगर तुम बात करो कोई बड़े प्लैनेट की, राइट, सो आई कैन से ओके सर, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो डिपेंड करता है किस किस पे, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट, yes or no, right, and second depends on this distance, right, or depends on radius of the planet, distance, right, or radius, generally radius को ही distance मानते हैं ना, ओके, सबको समझ में आई चीज, स्टेप बाय स्टेप सबको समझ में आया, हाथ उठा लो। सो छोटका जी क्या होता है और फोर्स क्या होता है, सबको क्लियर होना चाहिए, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, टेल मी, रेज योर हैंड, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, आई होप नॉट, एवरीवन इज क्लियर इन दिस, ओके, राइट, चलो अब हम एक और कॉन्सेप्ट बात करते हैं, ठीक है, ओके, सो एक चीज बताओ, ये याद रखना, ये याद रखना, जी इज अ कांस्टेंट, जी सबके लिए सेम होता है, ठीक है, जी सबके लिए सेम होता है, सो अब मानते हैं हम, ओके, if I say question one, right? Suppose we talk about two planets, right? Suppose we talk about two planets, है ना? Two planets. एक हमारा अर्थ हो गया, पता नहीं अर्थ बन नहीं रहा है, okay, so we have earth, right, and the second planet is suppose Krypton, ठीक है, right, imaginary planet Krypton, this is earth, earth, this is Krypton, पता है ना Krypton कौन सा planet है, tell me guys, which planet is Krypton? Superman, right, है ना, ठीक है, सो सपोज द मास ऑफ क्रिप्टॉन, इसका मास मान लो m1 है, एंड द मास ऑफ क्रिप्टॉन, राइट, m2 इज लाइक 3 times more than that of the mass of earth, मान लो, ठीक है, ओके, और रेडियस अर्थ का मान लो r1, और रेडियस ऑफ क्रिप्टॉन इज सपोज 2 times that of the radius of earth, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, so my question is, sir, what is g due to earth? Sorry, g due to earth when gravity due to krypton is suppose x or g dash, tell me what is g due to earth when gravity due to krypton is g dash, tell me, 2 मिनट, सबके पास 2 मिनट है, सोचेगा, सॉल्व करेगा, okay, okay, thank you Prahlad, so I hope all of you got this one, I hope all of you got this one, right, है ना, we wrote g is equal to g m1 by r1 square, g dash is g m2 by r2 square, right, so on comparing I can say g dash is equal to 3 by 4 g, or g is equal to 4 by 3 g dash, okay, now this question, right, let's take it, let's take it now, okay, so this is बैटमैन जो कि बेचारा उड़ नहीं सकता है ना, अर्थ पे है, और ये हमारा सुपरमैन, राइट, वी नो सुपरमैन सुपर पावर्स है सुपरमैन के पास, तो ये अर्थ से h डिस्टेंस ऊपर तक उड़ रहा है ना, दिस डिस्टेंस इज h, मान लो,
मान लो ये डिस्टेंस है h, ठीक है, राइट, और ये डिस्टेंस तो r ही रहेगा, हाँ या ना, टेल मी यस और नो,